भाई इसमें तो 3 डेल्टा डाइवर्जेंसेस दिख रही हैं। हाँ, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हुई है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंसेस हुई भाई हैं। 3 है भाई, वही तो इसमें कह रहा हूँ, 3 इट्स है। इम्पोर्टेंट। देखो क्या मतलब, जो मैं इन्फो करा ना मैंने, एक मैं हाँ इसमें घुस गया था, यहाँ से यहाँ तक था मैं इस ट्रेड में ना। जब ठीक यहाँ है। पे डाइवर्जेंस हो गई तो मैं आउट हो गया था। ठीक है। तो मैंने देखा कि यार ये जो पहले स्टैक्ड इम्बैलेंस था ये वर्क नहीं करा। ठीक है। करेक्ट। देन सेलर्स वाला काइंड ऑफ वर्कड, उसके ऊपर बायर्स हैड टू पुश, नहीं गई मार्केट, सेलर्स शोड एग्जैक्टली वेयर इट वाज, then they tried to continue it. Then this buyer came, but the delta also diverged, but the market did not move up. करेक्ट। And this is nearly the high of the day. इससे ऊपर है ही नहीं। And this is अच्छा। nearly the high of the day. तो इसीलिए मेरे को लगा कि नो दिस कुड दिस कुड वर्क। नहीं नहीं, डेफिनेटली आ गया मेरे को नोटिफिकेशन तो कि स्टार्ट हो गई है हाँ, मैं इसकी। बस आपको लिंक भेज रहा हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर हाँ, एक सेकंड बस। स्टार्ट कर लेते हैं। राइट। राइट। ओके, दैट इज ऑफ। ठीक है। मेरे को 5 मिनट दोगे भैया? मैं अपना वो तो पहले लैपटॉप भी, पहले मैं भी ये पोस्ट पोस्ट का सीन हाँ सॉल्व कर लूँ। लैपटॉप लेकर आता हूँ मैं भी अपना। ठीक है। यो क्या हाल है ब्रो? बढ़िया। गया बैठे। हाँ यार वो अभी आ रहा है बस।
फिर भी 3 बहुत हैं और हम 3 नहीं होंगे हाँ, एक तो मैं हूँ, एक तू है। तो इसलिए मेरा तीसरा करना पड़ता सही है। और बताओ कैसी चल रही है लाइफ तो? बस अभी ऑफिस का काम ऑलमोस्ट खत्म करा है घर पे सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया वेरी गुड। तुम्हारे यहाँ सब ठीक हाँ वो ऑल गुड। मस्ती चलती रहती है लाइफ में, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। वो तो नहीं रुकनी चाहिए बस भाई कभी ये रुकनी चाहिए, टच वुड। यूट्यूब स्ट्रीम देख रहा हूँ मैं सामान, तेरे को भी सेम दिख रहा है तो बता। 5 सेकंड का डिले है इन कंपैरिजन टू हाँ यूट्यूब पे डिले होता है थोड़ा सा डिस्कॉर्ड पे लाइव होती है गॉटचा। Sorry. Alright भैया, एक सेकंड बस, I'm just setting this up. तो शर्ट वोट भी पहनाया? वेरी गुड। अब कैमरा भी ऑन करेगा कैमरा भी ऑन करूँगा भैया। Yes. 1 मिनट में आ रहा हूँ। Alright boys. यार भैया इसको डिस्कॉर्ड पे कैसे करूँ कैमरा? बस ये जो लेफ्ट में टर्न ऑन कैमरा लिखा हुआ है वो दबा दे एक बार उस पे चेक करना क्या कहते हैं किस पे यूट्यूब पे हाँ वो है कैमरा ऑन लग रहा है स्मार्ट थोड़ा जूम इन कर सकता है फिर ठीक है वैसे तो ठीक है हाँ थोड़ा छोटा कर ले और अपने OBS के टॉप लेफ्ट में या टॉप बॉटम लेफ्ट में ले जा टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट ठीक है आई थिंक बॉटम लेफ्ट वर्क्स अगर साले वहाँ हैं ठीक है ठीक है थोड़ा और छोटा कर ले अगर इसको वीडियो छोटा करना है तो ठीक है
अभी हो रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है। जो लेट मी चेक ऑफ देख लूँ कैसे लग रहा है। हाँ भी दिखा दे यार। It's on YouTube. Please Okay. subscribe. Nice. Please subscribe. Nice. मेरे क्वालिटी तो ठीक है यार, है ना? क्या? क्वालिटी तो ठीक है। क्वालिटी बढ़िया लग रही है। क्वालिटी हाँ, सही जो है। ट्रेन में है। हाँ। Alright. Okay, मेरे को ना इस पे वो YouTube चलाना पड़ेगा। बढ़िया। अगर यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस होती है ना, it would be a good trade then. यूरो। Yes. अगर यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस यूरो पे यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस होती है, it would be a great trade to look at. एक होनी चुकी 855 कैंडल। हाँ नहीं यहाँ पे हो चुकी है and the whole नहीं 855 कैंडल। जैसे तू ES कह रहे हैं क्या? ये ES। so अच्छा वो ES पे मेरा कर्सर है। sorry. हाँ। इस पे क्यों नहीं आ रहा? पर मैं यूरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो यूरो पे एक हो तो चुकी है वैसे ये 855 कैंडल। ये वाली जिसपे मेरा माउस है? नहीं, और राइट है में फोर्थ लास्ट कैंडल। अबे ये फोर्थ। हाँ तो ये तो लेकिन वो है ना, बाई की है ना, बाई की डाइवर्जेंस हुई है प्लस वो भी ठीक है, वो भी दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंस यहाँ पे, एंड ये भी डाइवर्ज होकर ही लाइक यू नो इट वेंट अप, दैट इज ऑल्सो गुड। बट मैं तो सेल्स का मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अच्छा। ये ट्रेंड भी बहुत ही नीचे चल रहा है ना, यूरो इज एक्सेप्टिंग लोअर वैल्यू, तो उसी के चक्कर में देख रहा हूँ मैं। भाई मेरी वो YouTube देखते रहना, पता चले वो रुक जाए तो बता देना मेरे को। नहीं बिल्कुल खोल ही दे रहा है तो फुल स्क्रीन का। सही चल गया, हल्का सा लैग है तो आराम से मैं वही डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में। अच्छा YouTube पे लैग है, लेकिन अल्ट्रा लैग नहीं डिले डिले तो है इसका सोल्यूशन वैसे। हाँ वो तो YouTube का तो है ही, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते बजट। एक सेकंड मैं जरा डिस्कॉर्ड पे देखूं कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या, जो टर्न ऑन कैमरा हुआ क्या? लोडिंग आ रहा है। लोडिंग आ रहा है ना। Lenovo HD webcam video settings test video। भाई थोड़ा काम बता दिया ऑफिस वालों ने। अरे यार बोला मार do not work for anyone else भी है। If I could वो नहीं हो रहा ना, fail to start कैमरा। हो सकता है वो since OBS में यूज हो रहा है। हाँ तभी हो सकता है। I don't think so, वो इशू होगा, कोई और इशू होगा। ठीक है तो आप बता दो इशू क्या इशू है? तो वो बंद कर देगा ना तब बताऊँ। Alright, okay, no worries. Alright, मेरे लेवल्स तो वैसे दोनों में अभी ऊपर हैं। 1.161 है मेरा, उसका क्या कहते हैं। Alright, we don't have anything. क्या टाइम हो रहा है अभी? 15 मिनट है मार्केट ओपन होने में। और बताओ बॉयज क्या चल रहा है? सब बढ़िया ब्रो, ऑल गुड। गुड भी है एकदम, गुड। ये पीछे का लैंप चलाऊं क्या, बढ़िया लगेगा? आई डोंट नो क्या करें? जो पीछे लैंप है मेरे, चला के देखो। हाँ ऑलराइट, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसकी तार है क्या इतनी लंबी है?
कल चला के दिखाऊंगा, कल कल करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा, वो कल करेंगे। Alright, यार ये क्यों नहीं दिख रहा मेरे को, चार्ट वैल्यू क्रॉस योर पॉइंटर तो मेरे को पता है दिख रहा है, चार्ट वैल्यू क्रॉस क्यों नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। इसको तो है, इसमें क्यों नहीं है, fucking hell। गाने चला दो क्या? चला दे। चला देते गाने बढ़िया बढ़िया से। अरे यार वही तो देखो, मेरे को कुछ कमी लग रही है, ये हमारा बुक मैप तो खुला हुआ ही नहीं था, मैं देख ही नहीं पा रहा था, मेरे को लगा कुछ तो गलत हो रहा है। दिल भर एक सेकंड होगा। Six digit code 8469658469665. All right. यार एक देखो इफ देयर इज अ ट्रेडिंग प्लेलिस्ट, किसी ने तो बनाई होगी ट्रेडिंग प्लेलिस्ट। ये किसी बंदे ने बनाई है, yes. Let's play bar cards as well. डिस्कॉर्ड पे अगर तेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ ना तो ऑफ कर दे उसे। हाँ, गुड कॉल।
मैंने बंद कर रखा है, देखना है ना, वैसे तो मैंने बंद ही कर दिया था, उसी टाइम कर दिया था। टर्न ऑफ कैमरा। हाँ, हो गया। भाई बहुत गंदा सॉन्ग है भाई, सॉरी भाई, बहुत खराब सॉन्ग है भाई। वो पहले वाला बहुत सही लग रहा था। वो कह रहा वेट कर अर्पित वाला के वर्ड्स का। भाई इतना गंदा सॉन्ग है। सॉरी भाई, सॉरी मैन, वी आर बैक एट दिस। यार इस बंदे ने सही प्लेलिस्ट बनाई है। लेट्स प्ले द सेकंड सॉन्ग। यार क्या है यार, कोई ऐसा कुछ अच्छी सी बीट वाला हो कोई। Alright. Three minutes to be exact। वैसे तो एक बार यार देख लेते हैं, ठीक है। ये सॉन्ग्स तो अच्छे रिकमेंड करता है। Just 3 minutes पे भाई सॉन्ग ही 2 मिनट 55 सेकंड का है इसमें। ये देखो, I'm not lying, okay? यही होगा मेरे हिसाब से। देखो बरगद, I don't know, आर्टिस्ट अर्पित बाला, ठीक है। सॉन्ग ही 2 मिनट 55 सेकंड का है। क्या करूँ इससे? Fuck भाई, really sorry भाई, really sorry man। हाँ यार, good। Right, divergence हो गई है, and also the market is near our level. I would consider this trade if it moves a bit down. अब इसको शांति से चलने देंगे, ठीक है। अब नहीं चेंज करा भाई, सॉरी, यू हैड योर चांस भाई। सॉरी भाई। सॉरी भाई, सॉरी। गुड सॉन्ग। But Vivo के बाद पास the Vivo कहाँ पे है? यार भैया मतलब you're right, वीवो के काफी पास है, that is true। वही है, थोड़ी बहुत इसमें ना nuances हैं इसके, but it looks good, this trade looks great to be honest। Sellers are in control of the overall market as well। न्यूयॉर्क सेशन में सेलिंग ही आई है, न्यूयॉर्क सेशन में मेजर भी देखा है। डाइवर्जेंस यहाँ पे भी हो गई, बट हमारे लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर है अभी तो। बुक मैप पे नहीं दिख रहा यार, लेकिन कुछ ना मेरे को ऐसा कि टू टेक दिस, दैट्स ओनली प्रॉब्लम। बुक मैप पे नहीं है ये ट्रेड। मेरे में तो वीवो क्रॉस ही कर गया है। हाँ मेरे में भी क्रॉस कर गया था ऊपर, अभी भी अब क्रॉस कर गया नीचे की तरफ। हाँ। दैट इज ट्रू यार, बट मैंने ना प्री मार्केट में छोटा सा ट्रेड उठा लिया था, तो आई कुड रिस्क दैट मच अभी। आई कुड रिस्क, ऑलराइट, गॉन। Never mind। never minds।
anyways. यार कहाँ गया वो माइक्रो 60 सेट यार It's back भैया गाड़ा माइंडेड अब देखो अब इसमें ये मोमेंट जो दैट आई लाइक बुक मैप पे ना that I like तो वो I could now consider this if it of course ends lower end with a negative delta. Sorry यार भाई sorry यार now I'm not changing the song भाई let this playlist play out man sorry. डेल्टा तो नेगेटिव नहीं होने वाला इसका. हाँ बहुत मुश्किल है true काफ़ी मुश्किल है. मेरे को कॉफ़ी लानी है नीचे से ना. लेगा डाइवर्जेंस छोड़ देंगे. डाइवर्जेंस तो हो ही गई खत्म है ना तो मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ ठीक है. ऑलराइट रुकते हैं थोड़ा. Let's see if it makes any sense if it moves down a bit. Yes तो yes is falling वैसे भी imbalance ये जब खत्म हुआ है ना. क्या हो गया भाई न्यूज़ आइएगा. नहीं मार्केट ओपन में भी अभी 5 मिनट है यार कोई कुछ तो हुआ है. ट्वीट आया होगा कोई किसी का कुछ तो हुआ है ये नीचे ये ऊपर. वो भी रिजेक्शन आ रही है so but again the volume is good and delta is very heavily towards the upside. See, I like these kinds of things to see in the book map भैया. Okay. जैसे टॉप पर एकदम टॉप पे सेलिंग हुई है and these buying एकदम buying होती रही और फिर सेलिंग हो गई and then it continued towards the downside if it continued towards the downside. but ये भी अभी absorption का साइन है. absorption का साइन यहाँ पर होता अगर ये यहीं पर होता और यहाँ पे ऑर्डर फिल होता and then this would have moved. तो अभी absorption का तो साइन नहीं है but this is something that you can focus on कि like you know this happened in the market and that would exactly be where which trade would that be? Let's see if the market wants to move down. S&P पे डाइवर्जेंस तो है यार मेरे चार्ट्स में अभी दिख नहीं रही है तो 3 मिनट की डाइवर्जेंस इज व्हाट आई usually wait for 3 minutes for divergence. I don't use the candle वाली divergence तो वही है. या मेरे को कोई रिंग कर देना अगर कुछ होता है तो डाइवर्जेंस वगैरह होती है तो. अपना फोन साइलेंट मत रखियो. Yes sorry अभी करा मैंने ठीक है. Okay ठीक है so I'll be back boys.
भाई एक बार चला दोगे इसका बारगात चला देते एक बार, ठीक है। अगर इसका वर्स खराब हुआ ना भाई ये 1 मिनट पे आएगा। ऑलराइट, लेट्स 57 58। ऑलराइट, भाई मैंने 1 मिनट पे चला दिया है, देख लो यार। आया नहीं अभी तक। अच्छा, डाइवर्जेंस तो हो गई। हाँ वही वेट ही कर रहा हूँ मैं उसका। What happened? We'll still wait. If it closes downwards, we'll still take this one. शायद
बट कुछ दिख नहीं रहा यार, बुक में भी कुछ नहीं दिख रहा मेरे को जो ऐसे बोले कि एंड देन बल्कि ऑर्डर्स तो बहुत ऊपर 1632 के आसपास तो काफ़ी ऑर्डर्स हैं. 32 यहाँ पर काफ़ी ऑर्डर्स हैं मार्केट. ये तो देयर इज नथिंग हियर फॉर मी इन ES तो या तो नीचे आए काफ़ी after then I might consider taking a trade towards the buy side, but वो काफ़ी counter trend and काफ़ी काफ़ी वैसा होगा. See, sellers are there, sellers are present. एक बड़ा seller आया भी है मार्केट में. यार वो मेरे ना लैपटॉप में लगा हुआ है तेरा इंडिकेटर ना, वो कैंडल वाला है ना, वो जो वो ऑसिलेटिंग वाला है वो तो है ना, ऑसिलेटिंग वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, वो भी यार देख व्हाटएवर वर्क्स भाई. Ayush bhaiya, look how the market opened below the market profile's low and is trying to go down. Now where do you think is the next area of testing the value? Like where would you consider the market to move a bit down, like move from like ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो. You're asking me if it moves up, where should it move up from? Right? Yes, if it moves up. This right here, bro, where your cursor is. I think this is value area low. Yes. This should act like an area of support. Maybe मतलब it should, but like this would be a take profit level for me. I wouldn't like. I would look for buys here because the market 2 दिन से इसी value के अंदर है, right? Okay. So maybe market wants to stay here, but again we'll have to see how the market reacts at this particular level. But did that answer your question? Yes. Great. Got it. Alright. चलो कुछ तो आ रहा है समझ. हाँ सही है, और क्या भैया. Good only. स्कूल में तो पढ़ाई करी नहीं है ना सर, मैंने. सरांशु में I think 2 स्टैंडर्ड्स में तो साथ ही बैठते थे, याद है? 10th में बैठे हम. 10th में I think बैठते थे. हाँ 10th में अर्चना मैम थी हमारी क्लास की. 10th में नहीं, 9th में. 9th में नहीं 9th तो वो थी खामड़ी. वो तो बहुत ही अच्छी टीचर थी. बहुत अच्छी टीचर थी वो. Really helped me a lot. Shout out to St. Mary's. Yes, shout out to St. Mary's. अच्छा ओके, डिस्कॉर्ड पे इसने कोई मैसेज छोड़ा है, एक बार कोई चेक कर तो मैं देखता हूँ. और ट्रेड डिस्कशंस पे छोड़ा है इसने. ओके POCs, यार POCs पे ट्रेड मत उठाया कर यार. POCs तो आर द फेयरेस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस. POC के ऊपर नीचे ट्रेड करा कर, POC पर एग्जैक्ट ट्रेड मत करा कर भाई, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे कंसोलिडेशन ही आती है if the price is valued nicely तब. भाई बहुत रिस्की तेरा नाम है भाई, लाइक डिस्कॉर्ड पे प्रोफाइल पे बहुत रिस्की.
This is something I would I would stay away from, man. Nate Hickers. Shoot, why? Counter Strike से influenced, okay. Alright, bhai, alright. यार आ जाओ यार Discord पर ही आ जाओ stream पे if you guys are. यार मैं ना FIFA खेलता हूँ, ठीक है? 23 career mode ठीक है? career mode खेलता हूँ मैं, ठीक है? अरे यार खेलता हूँ यार, career mode खेलता हूँ यार आपको पता है मैं 2023 के FIFA में 2035 पे पहुंचा हूँ। भाई मैं भी कभी यार बोर हो रहा था ना, मैं भी career mode ही खेल रहा हूँ। सीन ही नहीं है। career mode best। 20 सीजन से ज़्यादा नहीं खेलने देते ना? पता नहीं यार no clue। हाँ 20 सीजन के बाद if you're a player they'll forcefully retire। बट मैं तो मैनेजर की तरह खेलता हूँ। उसको भी 20 सीजन मिले। 20 सीजन? हाँ। हो सकता है। I don't know, I have no clue। You can have maximum of 40 seasons, but when you're a player, then you retire and then choose to be a manager. Alright। वो 40 हो जाता है। Alright। 20 सीजन तो बहुत है वैसे यार। मैनेजर भी बार्सिलोना और अर्जेंटीना में ही होगा। Yes, exactly। नहीं एक्चुअली मैं उसका हो गया कहते हैं वो लिवरपूल एंड अर्जेंटीना। क्या? लिवरपूल को आ जाओ लिवरपूल को मैंने सोचा मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मेसी बिठा दिया। मैंने कहा मैड्रिड को तो खैर दूर से भी ना देखूं मैं। ज़रूरत ही नहीं है भाई, उनके पास अच्छे मैनेजर हैं यार। बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीग गेम जीत नहीं पा रहे ढंग से। भाई इस अगला सीजन देख। वही कहता हूँ हर बार अगला सीजन देख। अरे मैं वही वाली बात है ना, वही चैंपियंस लीग जीत के थोड़ा सा थक जाते हैं तो हाँ वो थकावट लीग गेम में आ जाती है ना, जो तो फिर जीत नहीं पाते। क्या बोलूँ ऐसी भैया दिस इज फन ओनली। मैं वैसे इसका हाँ of course लेग पुलिंग ही हो गया। yes हाँ डन भैया डन। What do I have in my pocket also? Oh
हाँ यार सुनते हैं कहाँ पर Spotify पे कहाँ पर है now listen to National Treasure ये इसके बाद this is a good song Sure, yeah. भी absorption का एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको शायद अभी हो जाए नो दिस थिंग बट शायद बन रहा है वो ये सही है what happened was there were these orders right these are market ये जो bubbles है ना market orders हैं ठीक है and these are limit orders all of these are limit orders तो यहाँ पे एक और बड़ा limit order है but let's consider this so now if the market falls if it falls if it breaks this low and falls तो delta भी देखो कितना negative है चलो अभी हुई नहीं anyways but it's filling higher this thing but these are passive buyers ये भी buyer है ये भी passive buyer है और ये भी एक बड़ा passive buyer खड़ा है यहाँ पे oh sorry passive seller and these are aggressive buyers ठीक है तो if any of like absorption हो सकता है अभी is what I'm saying delta भी काफी negative है So if I sum it up, absorption और exhaustion का एक main key difference ये भी तो हो सकता है ना कि बस limit order अगर है तो absorption है और अगर नहीं है तो यार exhaustion तो भैया कुछ भी नहीं है मतलब market बस खत्म हो गई वहाँ ऊपर जाके absorption में ऊपर लोग बैठे हुए exhaustion में तो कुछ है ही नहीं मतलब समझो then it's absorption if there is no force it's absorption True. एक trade बना तो है. I'm not very sure on this. This is a trade for me. I'll just get in. Euro? Yes. Euro. Okay. Divergence. Then the continuation वही मेरे को continuation ना सही नहीं लग रही है ना. Only problem is अगर ये थोड़ा सा अच्छे से नीचे आया होता ना तो it would have been good. वो हुआ नहीं but it's at second standard deviation so I am getting in. Stop just above 24.
35 पे ठीक है 35 I'm getting in again ओवरऑल रिस्क तो बहुत कम है मेरा इस पे उसमें को ज़्यादा इस पे भरोसा नहीं है स्ट्रेट पे ये कंटिन्यूएशन अच्छे से नहीं So this is the trade. Abhi like we are in this trade, almost at break even, and the reasons are as follows: ki we had this divergence and a bit of continuation. Maybe it works, maybe it does not, and we'll see. We'll see this. I'll just. This is the major trade. If it works, it works. It doesn't, it doesn't. डेल्टा भी नेगेटिव हो रहा है दैट्स अ गुड थिंग I'm getting in with 2 more contracts in this. I do want to get in with 2 more contracts, but मेरे को ऐसा लग रहा है that would be a mistake. It's क्योंकि अभी मेरा overall risk on this trade is almost for how much? $60 is the overall risk. Okay. काफी टाइट स्टॉप है इस पे. हाँ अब हुआ ना इस पे देखो यहाँ पे ES पे जो 6620 पे इतना बड़ा like seller got filled. Let's see if the market wants to move down. ये देखो एक तो ये हाई है डे का ऑलमोस्ट हाई है डे का ठीक है इसके ऊपर तो आज डे गया ही नहीं और उसके ऊपर एक सेलर बैठा है बहुत मुश्किल है कि दिस सेलर विंस बहुत मुश्किल है या एग्जैक्टली मतलब ड्रॉडाउन इसको लेना पड़ेगा थोड़ा इस वाले ट्रेड में कम पोजीशन से क्यों घुसा? अरे बहुत हाई पे थी ना और क्या मेरे को high उस टाइम पे ना यहाँ पे कंटिन्यूएशन भी नहीं मिली मेरे को जो हाँ कंटिन्यूएशन तो नहीं मिली और लाइक हाई पे मतलब द डेली हाई दिस इज द डेली हाई तो बहुत मतलब ऑफ कोर्स वी कैन कैप्चर द डेली हाई बट कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ से इट कुड डेफिनेटली मूव डाउन डेफिनेटली मूव अप
भाई एफवीजी कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। I was just waiting for this. भाई yes Sushant, we are shorts again of euro, but भाई यार एफवीजी सच्ची में कुछ नहीं होता, ठीक है। there is no logic behind it, there is nothing behind it, it's just candlesticks tells you open high low close and that's all it does, ठीक है। Yeah, Shashank, your thoughts in Euro USD. Euro, yes, like 6E is what I trade futures. So there's a futures, but yeah, Euro, yeah. वैसे तो ये A plus setup है, as per ICDs. So just you should wait for a retracement and then buy into it. Oh, अच्छा, रुको, let me check the retracement on this one. It's a retracement. Wow. Oh, 0.79. Wow, भाई ICD shit works weird. But technically, if you think about it, it's a buy setup as well because वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे liquidity चली गई, in break of structure आ गया आपका। वही we never know यार, वो दोनों तरफ से। अरे दूसरी तरफ से तो लगा एक बार ये। हाँ। बताता हूँ। ये 9 बजे वाली कैंडल जो है ना तेरे उसमें 9 बजे वाली से ऊपर हाई तक लगा, अरे नीचे रात के 9 बजे हुए। यहाँ से नीचे ये वाली, अरे लेफ्ट में नीचे स्विंग लो उससे पहले का, इससे पहले का स्विंग लो कौन सा है, ये वाला? अरे लेफ्ट में, अच्छा लेफ्ट, अच्छा ये यहाँ से लेके ऊपर तक लगा और फिर देखिए ये जो ब्लू एक और आएगा वो। ऑलराइट और यहाँ से डीप मार्केट नीचे इसके 79 लेवल से। ओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, या मैन एग्जैक्टली, देखो ये तो बल्कि परफेक्ट सेटअप है। देयर इज लिक्विडिटी हंट हियर, दिस इज हंट ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट गई ऊपर, दिस इज ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट, एंड देन द मार्केट मूव्स अप, बट देन इट मूव्स डाउन। यार वही है, लाइक देखो मैं ना, उसकी एक बंदा है, क्या कहते हैं, डेल्टा ट्रेडिंग करके एक बंदा है, ठीक है। तो वो बंदा कह रहा था कि लाइक even though you could have like a very bad strategy, okay, like a very bad strategy which has expected value of 0, that means कि like you will be like losing money in commissions in that, okay. But what you can do is you can like, of course it has highs and lows, so you can trade the PNL of that strategy. Like if it's working at certain period of time, you're making money, you use that, you leverage that to make more money, and you like when it's losing, you keep de-risking, so that when it's in the losing stage, are you getting it what I'm trying to say? Yeah. No, this is my office, buddy. The studio you'll see in the yes, this is the just my place. अब आया इसमें थोड़ा कंटिन्यूएशन, थोड़ा सा ना नीचे की तरफ। टेक्निकली तो भाई का टीवी और ब्लॉक के नीचे है। yes I'm looking if the market could move down, but मैं तो VWAP पर भी भैया निकल जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। VWAP पे and then at 1586 is what I'm looking at. 1586 is around what? 1586 here is where I look. 86, yes. यार ये तो बड़ा ही डिप्रेसिंग सा सॉन्ग है यार, ये तो उस पे चलता है यार, क्या कहते हैं, इसी की प्लेलिस्ट में से देखते कोई, रुको कोई बढ़िया से इसका कुछ।
Sorry. माइक गिरा है नहीं वो ये हाथ में ना मेरे ये उसका क्या कहते हैं DJI का National Treasure. Alright, National Treasure. You wanna listen to National Treasure. But ये भी अगर उस गाने की तरह टट्टी हुआ ना तो देखियो ठीक है. Jordan. I don't know. Is this the song you're talking about? Jordan something. Agni. This got beats by. भाई और मिल ही नहीं रहा मेरे को. National Treasure by Dake. अगर डाइवर्जेंस हो जाती है ना इस पे तो निकल जाना भाइयों. YouTube पे ही देख रहा हूँ मैं एक सिंगर. Yeah. For the city though. Yeah. Gotta light the tower up for this. Yeah. Okay. भाई let's just be honest. Drake is not national treasure. Drake is just shit. ठीक है और उसके कुछ गाने सही हैं. But अच्छा है गाना is decent. The song is decent. यहाँ पर भी we have to see how the market reacts at this जो वो है stacked imbalance. इस पे कैसे react कर रहे हैं market. You need to look at that as well. We are almost at VWalk. I would just like मतलब अभी है वैसे तो अभी तो है टाइम वैसे but तेरा VWalk कहाँ पे है मेरा VWalk है around 1606. तो जहाँ पे imbalance है basically. हाँ imbalance के लो पे है मेरा VWalk. तो अगर ये fill होकर ऊपर जा सकती है फिर तो market definitely. This is Akshay from Mumbai. He wants to start selling online. He just Back to Spotify.
यार वो कौन सा डीजे था यार, फक मैं नाम भूल गया उसका, बहुत तगड़ा था यार। ये गाना चला दो। Such a shitty song. Crazy song. The volume chart, do you want to see the profile chart of Euro or of the... This is of Euro. So the market went out of value. And then we are trying to see if the market tests below, gets back into value and tests below. The whole premise of the trade is that we are seeing that the value is being formed lower than the upside of the day. So let's change this song. यार आपने वो सुना है? रुको, ये नहीं, ये भी अच्छा है। Did you see that, Sushant? The volume chart that I showed you. वाले नहीं कोई lost cause. Alright, sorry. Divergence तो हो गई है. Oh shoot, we are out then. Yes, we are out. Alright. I mean, you should be out. मैं तो hold करके देखना चाहता हूँ इसको. नहीं, I'm out as well, boys. I'm out. I have no positions on. But तेरा वो rule नहीं था कि divergence अगर हो गई इसके बाद up close candle चाहिए. यार भैया $20 बचे थे बस इसमें, ठीक है, $20 या $40 जिस पे प्रॉफिट था, फिर मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता. तो you're right, मेरा वो रूल तो है, but it's alright. What's the fourth screen? I have like a bookmap on the fourth screen. This is on the bookmap. This is the bookmap. Then I have market profile in the market profile, and then VWAP and delta chart on the screen above this. And then on the sideways I have it for the euro. SBI time pass and chance screen. True. You can do it with one as well, भाई. वो तो एक मेरा तो देखो भैया सीधी सी बात है, थोड़ा सा जैसे मेरा फर्स्ट पे आउट था ना, उसी से मैंने 4 स्क्रीन ली थी, ठीक है, कि भाई वो मेरा था, वो छोटी सी चीज़ थी जो चाहिए थी मेरे को. ठीक है.
मैं तो कह रहा हूँ कि कीबोर्ड और माउस भी ले ले सारे टाइम माउस तो दे दिया आपने, इट्स अ गुड तो कीबोर्ड ले ले ग्रेट माउस, थैंक यू या ग्रेट माउस कीबोर्ड या कीबोर्ड अगर मैं तेरे घर आया मुझे दिख गया ना पुराना वाला माउस लगा हुआ वहाँ पे लगा हुआ तो है ठीक है, यूज नहीं कर रहा मैं, बस वो बात अलग है, लगा हुआ तो है भैया. The delta chart on the bottom right. This chart are you talking about? This is the delta chart. I think ये नॉर्मल उसकी बात कर रहा है बस जो टेबल नीचे है अच्छा this. Oh this. ये. जल्दी हट गया मैं ट्रेड से वैसे तो टू गया सही कर दो. आई शुड हैव स्टेड बट ये भी अब देखना ही इट विल गो टिल पूरा नीचे, ठीक है, इट विल गो टिल हियर नाउ क्योंकि नाउ आई एम आउट ऑफ द ट्रेड. तो अब तो मार्केट को नीचे जाना ही है, अब तो पैसा बनाकर देना ही है. Yeah, this is delta only. This is delta. So sometimes what happens is when this helps me visualize how much change has actually happened. From this to a negative delta is a big change. अरे shit भाई. सेलिंग तो हो रही है, वही मैं देख रहा हूँ. अगर ये फिर नीचे कंटिन्यूएशन आ जाएगी ना मैं घुस जाऊंगा वापस. सेलिंग तो काफी कर रही है बट मार्केट ऊपर ही जा रही है. चलो might be making a position there, you never know. कि बुक मैप पे कोई ऐसे सेलर्स मतलब लाइक पैसिव सेलर्स दिख नहीं रहे और डेल्टा अभी पॉजिटिव हुआ है. वैसे तो अभी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम आउट ही हो. We are out. हाँ इसमें भी अभी आउट ही होते हैं. Let the market show its hand ना पहले. Let it show something.
अब अगर divergence होती ना, it could make a lot of sense. Hello? Hello? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, बोलिए. Yes, it does have a delta divergence, that is true. But I'm just looking at continuation right now. And I got out in this candle at almost here because I thought that the market could move up after this divergence. You don't understand that this happened near the VWAP and there was a stacked imbalance below. So it could have been a point of market, deciding that we want to move up. I'm getting in this trade, Bia. I'm getting in this trade. I'm in. Might be wrong, might be really, really wrong. I don't like this kind of thing as well, but stop above 1623. Stop above this side. नीचे वो बन गई. हाँ वही ना, वही मेरे को वही लगा, क्लोज होते होते बन गई वो. Again, it's alright. But my stop is above 23 as well. This is
इस पे भी ध्यान देना जरा ES पे. This one. This is of ES. No. This is of ES. This is a complete different signal. Different chart. This is of S&P 500. This is of Euro. This is Euro. This is S&P 500. This is S&P 500. वो क्या बोलता है, क्या जवाब दे रहा है? वो भाई देखो ना वो, अरे आप देखो YouTube पे. अरे उसने पूछा इज इट द सेम यूरो फ्यूचर चार्ट विद अ डिफरेंट टाइम फ्रेम. हाँ तो मैंने बोला ना कि नहीं वो यूरो का चार्ट नहीं है वो. तो बोल हाँ डिफरेंट चार्ट. सेम ही तो चार्ट है भाई, लेफ्ट वाला टॉप लेफ्ट और टॉप ऊपर राइट. अच्छा दिस वो ये आप पढ़ो ठीक है, वो क्या पूछ रहा है ठीक है. क्या वो तो बहुत पहले बोला था वैसे बॉटम ऑफ द स्क्रीन वाला. तो उसने कहा है I am asking you about the footprint chart in the bottom of your screen. हाँ वो बहुत पहले बोला था उसने. उसके नेक्स्ट कमेंट है उसका देखो. ठीक है देखो अब आप देखो. would have saved all. I wish I could be part of the call, lads. True. I think तुझे ना इनको बड़ा लिख देना है. ऐसे लिखा तो हुआ है भाई. क्या? लेफ्ट पे लिखा हुआ है यूरो और बॉटम लेफ्ट वाले चार्ट पे लिखा हुआ है S&P. हाँ मेरे को लिखना तो चाहिए, कोई नहीं. अरे नहीं लिखा हुआ है तो उस पे ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट है. अच्छा हाँ इसके पीछे वो डाल दूँ क्या, बैकड्रॉप जो इनका आता है ES वैसे लिखा जो आता है वो. हाँ वाटरमार्क. हाँ डाल सकते हैं. कैसे डालते हैं? I think we'll be out on this one, man. Yeah, we are almost out. Almost out on this one. Yeah. I have 4,615 drawings on this chart. Yeah, crazy one. Yeah. Settings. Completely out on this trade. Hit this stop loss. Completely out. Execution on कर दो क्या, so that you guys can see.
We got in this one and got out in this one. It was a very quick SL. The only thing that I can say in this one is that we should have been more careful here. The market reversed from exactly there. मतलब ideally तो उसमें कुछ नहीं चाहिए था उस point पे. But yeah, मेरे को लगा नहीं था कि like stacked imbalance आ जाएगा. मेरे को लगा नहीं था बिल्कुल भी. और उसने completely fill कर and then reversed it. All right. Happens. Looking to short ES if anything shows up. सी पे मैक्स पोजीशन क्या लेता है? माइक्रोस में 40. अपने लाइव उस पे लाइव अकाउंट पे नॉट एवल. अच्छा लाइव अकाउंट पे 12 से ऊपर ही जाता मैं. 10-12 इसी पे रहता है. यार मेरे को टॉप स्टेप का भी ट्रेड करना शुरू करना है अकाउंट. आई हैव अ लाइव अकाउंट विद टॉप स्टेप बट वो कनेक्ट ही नहीं करा मैंने अभी. उसका आई थिंक ऐसा कुछ होता है कि एक ट्रेड लेना है महीने में उसका. अच्छा लेना है क्या? एटलीस्ट हाँ ले लेंगे. वो तेरा ट्रेडिंग व्यू से लिंक होगा ना. इससे नहीं होगा सीधा से. हाँ. यार ये इम्बैलेंस पूरा कंप्लीट फिल होके मार्केट इज रिवर्सिंग हियर. बट मेरा ट्रेड यहाँ आई लाइक टू लुक एट डाइवर्जेंस. तो if you look at this and then it is a kind of a change in delta kind of a thing going on. But ऐसे हर एक ट्रेड ही उठा सकते हैं यार. वही है यार. See? Fucking hell.
अरे इससे तगड़ा गाना याद आया यार भैया. चला दे हाँ. चला दे. Yes. है ना, ये थोड़ा वही वाइब थी ना उसकी भी, वैसे सही लग रहा था ना. Daylight savings के बाद से बढ़िया हो जाएगा. क्या कह रहे हो? Daylight saving time. Yes. 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 भाई और लेट हो जाएगा यार. Oh yes. Yes. बट भैया पता है लाइक मतलब वही है यार. हाँ लेट तो काफी हो जाएगा वैसे. ये भी है 8 बजे ओपन हुआ करेगी मार्केट. अब एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट द मार्केट वुड ओपन. हाँ. 8 o'clock. Yeah, man. That'll be great if you'll join. That'll be great, man. Yeah. Yes, man, Sushant, that's great, yaar. वो भी यार, he's a risk analyst at Funding Pips. Yes. जब आपका पे आउट आएगा ना तो वही प्रोसेस करेगा. Yes. तो अगर डिले हो रहा है ना तो you just let Sushant know, okay? Then he's the one behind it.
यार मैं सोच रहा हूँ भैया I'll get a GG Capitals की टी-शर्ट kind of thing, तो वही पहन लिया करूँगा. maybe not. Why maybe not? खास तो नहीं है, बल्कि आई थिंक पीछे दीवार पे ही ज्यादा लगवा सकते हैं, ऐसे जो वो आता है ना, वो मेरे को बहुत खराब लगता है, नियॉन साइंस वगैरह. नियॉन साइन नहीं बोला मैंने. मेरे को पेंटिंग टांगनी है, जो आप अगर मेरे YouTube पे देख रहे हो ना, वो पेंटिंग मेरे को टांगनी है वो, और उसके पीछे 2 और पेंटिंग रखी है, दिखाओ. एक तो सही है, एक तो लाइक उसके पीछे देयर इज दिस स्टीव जॉब्स की, ठीक है, फिर उसके पीछे एक और है, और मेरे को ये काफी सही लगती है. ये सामने तो टांग ही दे एकदम, ये शेर वाली ना, उसके लाइट के नीचे टांग दे. हाँ, उसी के लिए लाइट लगाई थी मैंने, बट वही है कि अभी हाँ, फिर sorry. हाँ, वो आलस आलस. बट जब तक वैसे वो सीजन वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं होती ना, हाँ, तक मत टांगी और ना खराब हो जाएगी. वैसे अब तो बारिश होगी कहाँ. बट तब भी साले फिक्स करा लो ऊपर से. भैया पेंटिंग तो टांग नहीं पा रहा, ठीक है. I don't think Euro is testing now lower values. Already वो value ये high की काफी ऊपर जा चुका है. Maybe the only area left to test for me would be 1636 and 1650. Those are the 2 areas that I would like to see what's happening. Tell me outside.
without me. So everybody just follow me. Controversy without me. Just follow me. Controversy. यार I would love ये अगर divergence हो जाए तो, and then continuation भी आए तो, because it's already at second standard deviation ऊपर week का value area, week का VWAP है already in actually at a single print. There's a single print here. There's a single print here which is extending back to EPOC, value area low, single print. Chop for me, so everybody just follow me. Controversy without me. Chop for me, so everybody just follow me. Controversy without me. Na 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 na. Oh fucking hell. अच्छी वाली डाइवर्जेंस हो रही थी. अच्छी वाली डाइवर्जेंस हो रही थी. डांस के 10 सेकंड में ही अब ये फटेगी नीचे. इस तो इतना इमोशनल है ट्रेडिंग के लिए बहुत दिखा चेस में ही कुछ कर रहा होगा. नहीं अरे मैं इस ट्रेड का वेट कर रहा था. आई वाज थिंकिंग कि इट्स अ गुड ट्रेड क्योंकि सिंगल प्रिंट भी है, वैल्यू एरिया लो के पास भी है. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी. सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, गुड अमाउंट ऑफ सेलर्स. बुक मैप पे भी चीज़ें दिख रही हैं अच्छी. अगर पूरी भी होती तो चली गई होती. सी You might just get some. Sorry भैया. Never mind. Alright, okay.
Last 10 seconds. Yeah. Oh shoot. I really want to get in now because now is the time it will reverse. Yeah. A lot of selling pressure coming in. Again वही बात आ जाती है जब ये हो जाता है ना at the end में selling हुई and then the market is reversing. That is something to look at. Not a good sign. Yeah, not a good sign. Show the book map. All right. This is the book map. Somehow got filled. वही absorption का एक अच्छा sign, अच्छा example would be this now. That sellers got absorbed by these passive buyers here. If it continues, if it does not continue, then of course, right now, if this is not at a buying stage, not at a buying stage at all. It's very expensive for me. Buy here. Second standard deviation. Clear divergence, but it is weekend. Second standard deviation. The market is at second standard deviation of VWAP. Alright, divergence has happened. I'm getting a call, boys. Be right back. Hello.
Alright. Yeah, hello. Yeah.
Like a flower that is swear when we dance you have to wait with me, stay with me, sway with me. When the world stops to play, hold me close, make me sway like a rosy of the sun. Hold me close, sway like a flower in the breeze, burn with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Must have hung a deep hope, deep hope, deep rap, nigga, eat a free throw, man down, call an avalanche, tell him big bro, never nigga to the cross, he walk around like Tito. What's up with these bony ass niggas trying to see Compton? They in the street, they hating, fuck them all in their mama. How many options you really got? I mean, there's too many options. I'm finna pass on his body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boy, man, I'm the one that up the store with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Hold on him, extra shit, what he there flowing him? Say Drake, I hate you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister phone. They tell each other the only one that get your hand-me-downs. And party at the park playing with his nose now. And Baka got a weird case where I see around. Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 that fuck 'em up. Wop, 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 I'ma do my stuff. Why you chillin' like a bitch, ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think that they will let you disrespect Pop, nigga? I think that open show will be on that stock, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the hour? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Ain't Drake that not slow. Rapping hard is still deep, I can go further, I promise. Ain't that something be rest, that's for fiction. You Malibu most funny, he don't know, boy, you Paul boy, let's get ready or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, we flipped over your boxes, we're over your phone. The unconventional option, pussy, in the best straight they push. Your face all in contact, might write this with a doubt. You can pop start, quit hiding, fuck a caption, won't action, no accident, I'm hands on. You fuck around, get polished, fuck no rain guard, he was in jail, that's conniving. The kid's face tatted like a bitch apologizing. I'm glad you bros came home, y'all didn't deserve him either. From Elijah down to Central, nigga better not be no Sabina. Your homeboy needs subpoena, that kind of moving flocks. That name gotta be registered, they place on them who watch. I mean, you know you niggas like another line of walk. Years all eyes on me and I'ma sit it up the block. Ayy, get a little level on me, I'ma get them dropped. Ayy, take shit music and I won't pass the ox. Ayy, how many stocks do I really have in stock? Ayy, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ayy, that was a lie, he a 69 guy. Ayy, freaky ass niggas need to stay ass aside. Ayy, burn your ass up like a fresh pack of Zod. Ayy, city is back up, it's a must, we outside. Ayy. कुछ भी नहीं हुआ ना. I think that's worth noting right now. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Be right back, Still boys. down, down, caught into some slaves. And Anna was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run into Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, it's the real nigga challenge. You call future when you didn't see the club. What little baby help you get your lingo up. What 21 give you false street cred. Thug did you feel like you a slime in your head. What Rainbow said you could be from Northside. What 2 Chainz say you good but he lied. You run into Atlanta when you need a few dollars. No, you're not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth for the matter. He was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga. He a 69 Dodge. Freaky ass nigga, he a 69 Dodge. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 Dodge. Freaky ass nigga, he a 69 Dodge. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Let me hear you say O-B-O. Say O-B-O. Instead
step that way, then step this way, step that way. Wait, my friend, only like in. Then step this way, step that way, then step this way, step that way. यार कुछ हो ही नहीं रहा. I'll wait for this level to get tested. Our speech, oh yes, 9:30 को है, 9:30 है शायद, 9:30 IST. Let me check कब है. Nine 9:50 PM, alright. Good time, man. To the chase, no time to waste, back to my place. First from the club to the crib's like a mile away. I'm more like a paddler, shall I say? Plus I got a pad up your gallows game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey girl, feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tyro. Possibly then you're over. Look back and watch me smack that. All on the floor, smack that. Give me some more, smack that. Till you get so smack that. Oh, smack that. All on the floor, smack that. Give me some more, smack that. Till you get so smack that. Oh, dividends rolling, D&M rolling, moving on all us men rolling, women just rolling, big booty rolling, soon I'll be all of them and rolling deep. Hitting no less than 3. Block will style like weed. Girl, I can tell you want me to stay with me. I feel you creeping up. Stereo. A lot of sellers here, no? Can you guys see this? A lot of sellers making their positions in this. Right. आयुष तो भी ICT से इसको शिफ्ट कर देते हैं. If I was just another dusty record on the shelf, would you ठीक go है, your वो भी. Yo, if I asked you to stretch my back, could you manage that? इधर देखा है ICT में. ICT में मजा नहीं आया. यार ICT में मजा आया, but like Garvit says, buy side और sell side दोनों का setup दिखता है, clarity. और फिर उसके बाद my personal experience was कि सब कुछ एक trading plan, checklist, सब कुछ develop करने के बाद then you see an idea of trading. This makes no sense, right? That's Failing मतलब bad test में fail. Back testing में यार, I'm talking about light testing, trade लेके. Over a period of different trades. Over a period of, मैंने ज़्यादा बड़ा sample set तो नहीं देखा था, but 150 के आसपास trades थे. Yes. हाँ यार, but फिर वही है कि sense बनानी चाहिए कोई चीज़.
my thing. Have you seen ICT though? हाँ सारा? नहीं यार पूरा खत्म नहीं करा था जो उसकी फिर मैं लाइक जो काफी सारी सीरीज मैंने देख ली तो उसके बाद जो उसकी मंथली वाली सीरीज थी ना जब वो चालू हुई थी तब मेरे को थोड़ा सा लगने लगा कि बेकार है उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट वगैरह तक ठीक था मेंटालिटी रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी सब ठीक था चेस खेलते हुए अभी तो प्लेइंग सम चेस हो गया क्या करे अभी कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट्स में चेस खेलेंगे आज स्पीच भी है ना 9:50 को फिर उसके बाद तूने भी वो देखा G7FX G7FX नहीं ये क्या है? अच्छा तो सीधा GG देखेगा है क्या G7FX? बता दे भाई कभी भैया सेम कॉन्सेप्ट्स ही है मतलब पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक मैंने उसी से काइंड ऑफ मतलब उससे थोड़ा सा सीखा थोड़ा सा मैंने कहीं से सीखा बट लाइक उससे भी पूरा नहीं सीखा क्योंकि उसके भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स बहुत बोरिंग है यार वैसे तो G7FX बड़ी बड़ी वीडियोस है 2 घंटे की और बहुत नहीं बोलूंगा ठीक था बहुत ही ज़्यादा धीरे बोलता है वो या हाँ तो मैंने सारी वीडियोस उसकी 1.25 पे देखी है हाँ। वो तब भी मुझे नॉर्मल लगता था कि ठीक है हाँ नॉर्मल स्पीड में बोल रहा है वेरी क्रेजी थिंग था और बकबक तो काफी टाइम करता था बहुत यार इतनी बकबक कैसे कर सकता है कोई फिर मैं वो ICT आधा देखने के बाद इस पे शिफ्ट हो गया था G7FX पे हाँ फिर उसके बाद अब यहाँ पे है सही है सेंस बनानी चाहिए भैया कोई भी बात ना यस हाँ यार मतलब सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही थी मुझे पूरा ICT देख लिया ठीक है पूरा तो नहीं होगा 2022 के बाद नहीं देखा मैंने तो बट भाई मैं जो दोनों का गई तो वो दिख रही है ट्रेड अब जैसे मतलब ICT की अगर नजरों से देखूँ मैं यूरो तो 15 मिनट के चार्ट पे ही ये तेरी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है ठीक है चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गई है बाय डिलीज की रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए तो आई थिंक कल ही आएगी लंदन में देखते हैं फिर बाय का सेटअप करेंगे टुवर्ड्स द अपसाइड वो ये सब है यार बट हाँ एक मैंने घर पे दिखाया था मेरे को कि एक चीज थी एक मतलब कॉन्सेप्ट ही है कि वाई प्राइस इवन मूव्स ऑन टेक उस हो जाओ को बढ़िया हो बहुत सही चीज़ है वो भाई वही है सब कुछ और क्या है वेरी लॉजिकल एंड वेरी हाँ सब कुछ ही वही है वो मतलब आप कितने भी ICT के कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो कुछ भी कर लो बट एट द एंड अगर वो सेम फंडामेंटल चीज नहीं हो रही है तो फिर बड़ा कुछ हो रहा है मार्केट में ट्रू 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 क्या वो aggressive buyer seller हाँ हाँ यस यस वो तो ICT के बारे में भी भाई नहीं बताया था 2022 के एंड में हाँ फरवरी में देखो मैंने सबको मैंने सरांशियों को भी ICT के बारे में मैंने ही बताया था बट द थिंग इज कि हम वॉक पे जाते थे पता नहीं बोलते रहता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था बट द थिंग इज कि वो जानना भी जरूरी है सो दैट यू नो कि लाइक व्हाई इज इट रॉन्ग लाइक करेक्ट बिना जाने तो हो नहीं पाएगा ना
उसका मजाक भी बहुत बनता है। किसका? इसका ही हेड क्या नाम है उसका, आईसीटी वाले का। टीचर? अबे टीजेआर थोड़ी है वो, अच्छा हेडल्स क्या नाम है उसका। अच्छा माइकल जी हेडल्स्टन। हाँ, कि ऑलराइट ये जाता है रॉबिन कप में हार के आया था। वही तो कह रहा इस बार हूँ, देखो, 91% to 99% लॉस अगर आप लेकर आ रहे हो किसी कप में से, लाइक, हाँ, तो भैया लाइक काय बात के तुम बेस्ट ट्रेडर हो? 99% भैया, 99%। हर साल कहता है कि अब इस बार देखना हाँ। फिर उसका पता नहीं होता। बहुत होता है अरे हर साल तो ये भी कहता है मैं ट्विटर छोड़ रहा हूँ। हाँ, क्रेजी यार, क्रेजी। लेजिट जब मैंने आईसीटी देखना शुरू करा था ना, तब मैंने ट्विटर पर से फॉलो करना शुरू करा था। फॉलो करना पिछले साल की बात है, ठीक है। हाँ। जैसे फॉलो करना शुरू करा, देखा ऊपर ट्वीट के भाई छोड़ दो ये वो। हाँ। फिर उसके मैंने कमेंट्स पढ़े, तो था कि अभी थोड़े टाइम रुक जाओ वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस उसका ट्वीट आ गया कि मैं तो चला गया था बट यही हो गया, तो वापस आना पड़ गया मुझे। Exactly. Shashank, Robin Cup is वो क्या कहते हैं? You can see the this thing क्या कहते हैं? Leaderboard. Yes, you can see the leaderboard and all the players that are participating in it as well. But like ऐसे you cannot see the live trades that they take. But I think it's an invite only competition, bro. Invite only, because I don't know if it's invite only. But I don't know. No, it is not invite only. नहीं, invite only नहीं है, क्योंकि वो भी ट्रेड्स बाय मैट वगैरह भी गए थे उसमें। Okay. हाँ। खुद ही जाना होता है, थिंक फीस वगैरह का शायद काफी ज्यादा होती है। हाँ, उसमें कमीशंस काफी ज्यादा होती हैं, that is true. Yeah. Most consistent winner. Okay, so most consistent winner that I've seen is that guy. फाबियो। नहीं, फाबियो वाल्तीनी का जो मेंटोर है, क्या नाम है उसका? समझ गया। समझ गया, जर्मन बंदा जो है वो। He runs this thing, World Class Edge. Runs that page and stuff. Really nice guy. Still waiting if some divergence kind of happens, because right now it's just the market is too expensive for me. पैट्रिक नेल। हाँ, Patrick Neal, yeah. Nill or Niel? NILL। Nill, yes. Yes. वो तो ऐसे जर्मन लगता ही नहीं है, ऐसे खुश बहुत खुश रहता है वो, कुछ ज्यादा इतना क्या खुशी हो रही है उसको। खुशी होगी भाई जब ट्रेडिंग में टॉप पे है तो। हाँ, true, yeah, true. Let's see if this stacked imbalances work, because there are a lot of sellers at this particular price point. Let's see if it works. फुल टाइम में घर में भी जाएगा वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल जाऊँगा भैया मैं तो। I'll definitely go there and win that shit. Yes. It's all this historic moment going. For sure.
पीछे रख लिया रॉबिन कप की ट्रॉफी बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में रखी होगी ट्रॉफी. यस 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 यस. यार ये लेवल हमारे लेवल से जा रही है मार्केट, बट हमारे बिना जा रही है यार. That's sad. ये मेरे Yes, में so- फोटो नहीं आ रहा. नहीं ठीक है. PS तो जितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है इसमें तो क्या ही ट्रेड करेगा. हाँ दैट इज ट्रू, बट कहीं भी डाइवर्जेंस होती, कुछ भी होता तो घुस तो जाते ही भी आओ. इससे भी स्टैक्ड इम्बैलेंस से मूव आउट कर रहा है, बट जस्ट दैट वी डोंट हैव एनीथिंग हियर. तो वो स्टैक बैलेंस के बीच में फंसा हुआ है. हाँ एक्चुअली इस स्टैक्ड इम्बैलेंस एंड स्टैक्ड इम्बैलेंस जिस तरह फटेगा फिर फटेगा ये. मेरा मन कर रहा है जस्ट दो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट से जस्ट घुस जाऊं बस. That would be of इसमें no एक use. कॉन्ट्रैक्ट स्टैक बैलेंस बना नहीं आ रहा. हाँ तेरे में एक बैलेंस बना नहीं आ रहा. कौन सा? वो बाय वाला कौन सा वाला? जो थर्ड लास्ट कैंडल में है. थर्ड लास्ट कैंडल दिस वन. हाँ इसी में ये वाला. हाँ ये वाला. हाँ ये बनना तो चाहिए. सेटिंग होगी कुछ फक सी, उसकी वजह से नहीं बन रहा. हाँ तो मैं तो उन दोनों बैलेंसेस के बीच में कह रहा था फंसा हुआ है. मैं तो इन दोनों के बीच में गया था, इसके और इसके. हाँ Yes. मेरे में वो नीचे वाला नहीं आ रहा. अच्छा. Alright. अभी मेरे को लग रहा है पहले तो ऊपर जाना चाहिए. या भी आओ. यहाँ से नहीं करेंगे ये मूव डाउन. यहाँ से नहीं करेंगे मूव डाउन. Okay. And why is that? Any logic, or is it ऐसे ही intuition intuition based trading? दिल कह रहा है. दिल कहता है ना 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 ना. मैं दिल चाहता होता है. Oh sorry. Okay, my bad. दिल चाहता है does not work like. Let me play something nice यार. बहुत बोरियत हो गई भाई, बहुत ज़्यादा. कुछ ऐसा एकदम बढ़िया सा गाना हो. वाओ क्या गाना. Motivational shit. Alright, bye bye. Take care, bye.
तलविंदर चला दो कुछ, तलविंदर समथिंग। जो बंदा लाइव नहीं गा पाता ना, हाँ, क्या तलविंदर लाइव नहीं गा पाता क्या? मेरे को नहीं पता। नहीं ये बस की नहीं है। हैं? हाँ। तो भैया कभी कभार हो जाता है, चलो। अभी कभार नहीं ना भाई, वो तो बंदे पे होता है ना कि भाई दिलजीत को देख कितना बढ़िया लाइव गाता है। आई गेट दैट, बट दिलजीत कितना पुराना भी तो है, और वो अब लाइव गा रहा है। अबे बात होती है कि तुम ऑटो ट्यून यूज कर रहे हो अपने गानों में, फुल लाइव तुम गा ही नहीं पाओगे फिर। देखो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि भाई गाना अच्छा है कि नहीं है ना। गाना तो अच्छा है उसका यार, कम ऑन। गाना तो लाइक चाहे कुछ भी यूज करे, it's like either you use trend line and make like buck out of it, or a lot of money out of it. It's alright as long as you make money, right? तो चाहे आप कितना भी ऑटो ट्यून यूज करो, बट अगर द म्यूजिक इज गुड, इट्स गुड नो। अगर म्यूजिक खराब होता और इतना ऑटो ट्यून यूज करवाते जैसे बादशाह की तरह, ठीक है, तो मैं कहता कि हाँ भाई yes, Sujan, let's go. Yeah, man. Let me play that. That song is good. बढ़िया गाना है भाई। करण औजला भी सही गा लेता है शायद। Karan Aujla does well. Yeah. या ES पर डाइवर्जेंस होगी। पता नहीं भैया, मैं छोड़ दिया सोचना। 10 सेकंड में आगे मेरे को कर देता है काम। हो गई। वो तो भाई, we'll just wait for a continuation and then put a stop over this. बढ़िया भी ठीक है आपको। ठीक है, EPOs अभी तो VWAP से काफी ऊपर है। VWAP से तो ऊपर है, बट उसके वो कहाँ है? क्या? EPOC के पास ही तो है। हाँ, अच्छा, okay, in that way, yes. Yes. True. Let's see continuation. अगर continuation मिल गई तो दूर आ ही जाएगी EPOC से। कंटिन्यूएशन तो हो रही है भैया, बहुत बड़ा स्टॉप होने वाला है इसमें। वो तो नहीं यार। वैसे मन तो नहीं है स्ट्रेट में घुसने का honestly। हाँ यार भैया, बहुत बड़ा स्टॉप होगा, बट VWAP के ऊपर है। This speech 20 9:50। अरे एक सेकंड रुको यार, एक कॉल आ रहा है।
Hello? Alright, 1 second and we will be in. Alright, my stop should be above. Stop is $127 यार, that's it too much. एक बहुत ज़्यादा ही है stop मेरा for this one. मैं इससे ज़्यादा घुसूंगा भी नहीं इसमें. Let's see. If it's a quick break, then it is what it is. Be right back, boys. Be right back. अच्छा ट्रेड तो नहीं है ऑनेस्टली, एकदम टीपीओसी पे है. ओ भाई क्या हो रहा है? Alright. Diversions फिर से हो गई यार. Fuck. Alright. But I'll hold this one. Let's see. ऐसे तो निकल जाना चाहिए था मेरे को यहाँ पर. But okay. Sorry.
एक सीन है बेटा उसको वही वही देखा part. मैंने. Let's see if it's oh, it's stopped. We got stopped out for almost $130. ये भी गाना अच्छा है. I really like this level. No, I look at bookmap. I have the bookmap here at the screen. It's just that I have a strategy which is basically like when the delta divergence happens, and then you look for continuance, and you have a stop placed on that. The bookmap just tells you if there is absorption or not. If there is a lot of absorption or not. Fucking hell, dude. My reverses. भाई वो यही करता रहेगा ये उसमें कहीं नहीं जाता
शायद market would become a bit dry till the news comes out. दोनों ही ड्राई हैं काइंड ऑफ, अगर हाँ, देखा जाए तो क्या कह रहे हो? दोनों ही ड्राई हैं। हाँ, दोनों ही ड्राई होंगी क्योंकि वही है ना भैया। हाँ 10:30 के बाद से लगा रहे, कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। Sorry, what was the logic behind the trade? The logic was simple, man. We had this level marked. It had a monthly. This was a monthly level. If I could just give you a second, I'll let you know. There was daily level. There was sessions level here. So I was looking at shorts here. So when I was looking for divergence to happen. The market already, kind of was trying to move down, right? And here the divergence happened and the continuation happened. But also somehow, we were caught here at the wrong side without bookmap showing that, there were no passive buyers below here, right? So market could have gone down, right? There was no signs of absorption, right? So this kind of things happen. It's alright. It's part of the game. Don't worry about it. So the logic was basically that only, that the continuation should continue, and we were coming off previous month value area low, so the market clearly did not like to be in the value, and then was trying to move down. It's all right. I should open a YouTube chat or something like somewhere so that I have an eye on it. हाँ है ना, क्योंकि वो साइड में है ना मेरे लाइक लैपटॉप में, तो आई तो completely forget about it. See this kind of a thing, this is a sign of an absorption happening, and we can confirm that with the bookmap here. Right, you see this? Buying at the top, someone bought in, right? If this divergence happens and the market tries to move down, it could be a good trade. Could be a good trade. We don't know. It could be a good trade. How do I get the chart out? Now it's moving towards the downside now. Yeah, contract size is pretty heavy, but also we are in the middle of the New York session. That's true. Contract size is very heavy. Yeah, it's gone. Yeah, this is the usual amount, man. This 500, 600 contracts in a New York session is pretty good. 22,000 or 8,000 is normal, only average. I would say traders are opening like not that much. Like as a trader, it wouldn't make much sense. See what happens if the news is very anticipated, like we know that what is going to happen. We know what is going to happen, right? Like the rate cuts last time. Everyone knew that there was 90% chance that the rate cut is going to happen. So usse pehle hi the market started moving. But when the market is in a consolidation state or consolidating in a price range, then nobody knows what is going to happen. Just a second, I'm getting a call. Hello? Hello?
आंखों का चार, सौ बंदे मेरे साथ ऑन लो। किया 6 में लैंडिंग गंजी काला रखते और ब्लैक फोर्सेस मैचिंग म्यूजिक मेला रखते हमसे ना होता एक्टिंग हम पैसा उड़ाते फिर अब बोलते फैशन हम सही में उड़ते जैसे घर में राशन तेरे बाप के बेल सा हर फोर्सेस लैंडिंग एक्स्ट्रा दाते तुझ में इसलिए करता क्या पे हम गाड़ी उड़ाते सब फिल्म की एक्शन कभी खाऊ गली कभी चकते हम बैठते ना किया शादी शोज फिर भी बहुत एक एक्शन ब्रदर व्हाट्स रियली क्रैकिंग हम जैसे हम फ्लाई बट क्या लाभ मना हम वैसे भी हाय और सीधी में उड़ते विदेशी दवाई मैं वो घेरा बुरा सपना हूँ जो तुझे सताए तुझे पता है भाई तू कितना पानी है डिक्की के अलावा भी सामान होता गाड़ी में हर दिन याद दिवाली है अब घेरा नाला तेरे नीचे सबको पता है तू चाली है हम वैसे भी कमाली है Yes, तो मैं सोच रहा हूँ बंदी कर दूँ. Yes, any ऊपर 6710 is a good level. If the market goes till 6710, then it's a decent level to look at.
Fuck भाई, what the fuck? क्या अरे वो नहीं होती वो ततैया? हाँ So it's here. मुझे भी डर लगता है उससे। यार डर वो काट जाए तो दर्द होता है यार। हाँ वही डर लगता है इस मौसम में वैसे कहाँ से आ जाए मतलब I don't know, अब तो ठंड हो गई। ठंड में तो नहीं आना चाहिए। बट अगर तेरे पास बैडमिंटन रैकेट है ना हाँ। तो उसके बड़े आराम से मरते हैं है? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अरे fuck. क्या कर रहा है भाई वो गाने सुन रहा हूँ मतलब एक मैंने वो भेजो क्या आपको भेजता बढ़िया है नहीं ये तेरी आवाज कहाँ से आ रही थी क्या कर रहा था ये तो फोन से आ रही थी रुको देखो मैं भेजा आपको देखता हूँ देखा हाँ? देखा So it's now time to unleash the beast. अब बॉक्सिंग शुरू कर दी वापस बढ़िया है इधर एनी टाइम में ही वहाँ पे तो बहुत बैग ही नहीं था नहीं लगा दिया इन लोगों ने बढ़िया बट दिक्कत ये होगी बहुत सारे लोग देखते हैं यार वो है यार वहाँ पे ना बड़ा सेक्लूडेड था वो हाँ वाला तो बढ़िया था कोई देखता नहीं था यहाँ पे ना बहुत लोग देख रहा था थोड़ा अजीब लगता है and the थोड़ा problem कॉन्शियस हो जाता है बंदा the problem is कि like चलो देख भी रहे हैं तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है देखो देखने लायक चीज बनाई है भगवान ने ठीक है बट घूरते हैं यार घूरना तो कपड़ा उतार के मत करा करना फिर है कपड़ा उतार के अरे कपड़े उतार के नहीं करता मैं ठीक है आई ऑलवेज वेयर अ टी-शर्ट और समथिंग हाँ नहीं तो
ओ भाई एकदम लेवल को टच करके नीचे आई है। कौन सी PS पे अच्छा अब मेरा कोई लेवल नहीं है एट दिस पॉइंट। यहाँ पे है तो कोई किसी उसका वो है ये अच्छा previous day। POC है, हाँ POC है, प्रीवियस हाँ। डे TPOC, यस यस यस। यस एकदम और हो टच सकता है। करके नीचे। यहाँ से नीचे आ सकती है मार्केट, ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। But again 67 40 20 are the levels, 67 10 are the levels. As a market could really move. अरे यार, हेलो 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 हेलो, एक सेकंड, हाँ जी भैया, कहाँ पर भैया छोटा कोई ला रहे हैं ना?
get anything? Nothing, right? No. Alright, but the market is at our level, right? Alright, divergence has happened here. लेना है यही वाला POC से react कर रहा है. हाँ. ES तो मैं नहीं करता है ट्रेड. नहीं कर रहे? ना. ये कुछ नहीं करेगा. सेल ले लेगा. Alright. जैसे इसकी मूवमेंट है ना. ये stacked imbalance भी अगर break कर दिया. Good move down. Book map में भी बड़े बड़े sellers दिख रहे हैं देखो. Only sellers at the book map. Solo. कितनी red diamond sales. Look at the delta as well.
That's what I'm like looking at as well. Speech in 13 minutes. I've opened it here. I'm waiting. What the fuck? Alright, I started. Jay recently retired and no one is here to accept the award, but please join me in congratulating him. Oh, they are here. Okay, that's right. Yeah, come on up. दिखाते स्पीच भी ट्रेड थोड़ी ले रहा है अभी Oh, यार ये लोग मेरे Speech पे- कॉपीराइट डाल देंगे. अच्छा हटा दे फिर कोई नहीं अगर तुझे ट्रेड लेना है तो लो क्या? डाल लेते हैं 2. नहीं वैसे एक contracts. Seeing a lot of sales. Stop. अरे यार 50 होगा stop. And the second place goes to Richard Woodkind of the University of Colorado Boulder. After the year we've had, special kudos to both winners. Great job. So now I'd like to turn it over to our president, Emily Kolinsky-Morris, to present a few more awards, none of which I won. So. We'll get you next, Jeroen, because I am here to take a moment before we move on to our lunch, the rest of our lunch program. I am going to take a moment to recognize 4 outstanding members of the NABE board whose terms are ending this year. So we have Wilco Schultz-Mollendorf. Oops. And then here in the room, if I could ask you 3 to come up, we have Kathleen Maven, E.L. Selfin, and our past president, Julia Coronado. So just a few words about these wonderful individuals who have given 3 years of their time to the NABE board, or a little longer in the case of Julia. First, Wilco, who could not be with us today. He's of Amazon, and his impact on NABE has been tremendous. He's been a key driver of the Tech Economics Conference, helping it evolve as we've incorporated causal inference and AI tools into our collective toolkit. His vision and technical insight have helped keep NABE at the forefront of applied data and technology in economics. And then we have Kathleen Maven from the Federal Reserve Bank of St. Louis, who has been deeply engaged across NABE programs from the annual meeting to the Economic Measurement Seminar, which was absolutely fantastic this year, and has been an important contributor to the Certified Business Economist program and the NABE Foundation. Thoughtful input and steady leadership has strengthened nearly every initiative that she's touched. Then next we have E.L. Selfin, Chief Economist at KPMG UK. Yale's been a vital bridge between NABE and the global economics community. Throughout her involvement in the policy conference and in the international symposium, she has helped NABE connect with leading economists and policymakers across Europe. Yale's deep network and international perspective have been invaluable in broadening NABE's reach, and fostering meaningful global dialogue among economists. And finally, It's on money control. You can just write Powell's speech. Who has been a You can true see it there. cornerstone of NABE's leadership for the past decade. Julia has served 7 years on the board, including as president and most recently as past president. Her macroeconomic expertise, her mentorship, expansive network have all shaped countless NABE programs and surveys and helped advance the CBE program. So on behalf of all of NABE, I want to thank Wilco. Thank you, Kathleen, Yale, and Julia for your service, for your leadership, and for your lasting contributions to our community. And not lost contributions, but lasting, because I know you're not quite going anywhere, just rolling off the board. So if you could please come up, and we will, I think, do a quick picture. Your plaques have not arrived, unfortunately. Supply chain issues. Yeah.
All right. Now we move on to our awards presentation. So normally when we have such a well-known and respected speaker, I would say this person needs no introduction and you would rather hear them speak than hear me speak about them. But at this moment, and in the case of the presentation of the Adam Smith Award, I think it's more than appropriate that we take a moment to appreciate exactly who it is we're recognizing today. So Jerome Powell first took office as chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System in February of 2018 for a 4-year term. And he was reappointed to the office and sworn in for a second 4-year term in May of 2022. He serves as chair of the Federal Open Market Committee, the system's principal monetary policy-making body. Mr. Powell has also served as a member of the Board of Governors since taking office on May 25th, 2012 to fill an unexpired term, and he was reappointed to the board in June of 2014 for a term ending in January of 2028. Prior to his appointment to the board, Mr. Powell was a visiting scholar at the Bipartisan Policy Center in Washington, D.C., where he focused on federal and state fiscal issues. From 1997 to 2005, he was a partner at the Carlyle Group. He served as an assistant secretary and as an undersecretary of the U.S. Department of the Treasury under President George H.W. Bush, with responsibility for policy on financial institutions, the Treasury debt market, and related areas. And prior to joining the Bush administration, he worked as a lawyer and investment banker in New York City. In addition to service on corporate boards, Mr. Powell has served on charitable and educational institutional boards, including the Bentheim Center for Finance at Princeton University and the Nature Conservancy of Washington, D.C. in Maryland. And of course, among his many other professional engagements, he has been a strong and consistent supporter of the National Association for Business Economics. And we are very grateful for that engagement. So, because of that, we are very pleased to be presenting him today with the Adam Smith Award. The Adam Smith Award is NABE's highest honor, and it was named for the 18th century Scottish philosopher and economist whose ideas about economics led to the growth of modern capitalism, and this award has been given annually by NABE since 1982. And it is essentially, as one of my colleagues said to me, this is our Hall of Fame. Past recipients include several Fed presidents and prestigious economists across the spectrum, including Janet Yellen and Ben Bernanke, as well as Arthur Laffer, Susan Athey, and going a little bit further back, William Poole from the Federal Reserve Bank of St. Louis, and Lawrence Klein, who won the award in 2004. We are very pleased today to be awarding this honor to Jerome Powell. Jerome Powell's exemplary leadership as chair of the Federal Reserve, especially in navigating the complexities of monetary policy during challenging times, has had a profound and lasting impact on both the U.S. economy and the global financial system. Under his stewardship, the Federal Reserve has effectively managed unprecedented economic challenges, including the COVID-19 pandemic, by taking a thoughtful and data-driven approach to monetary policy setting. His decisive actions to support economic recovery, promote financial stability, and ensure a resilient financial system have demonstrated an वही तो कह रहा हूँ यार everyone knows who the fuck is The strength of his leadership has also earned him the respect of policymakers, economists, and business leaders worldwide. ऑलमोस्ट मेरा ट्रेड ही जा चुका है हो गया एक टिक और एक लेजिट टिक पे बचा हुआ है ओ भाई साहब ओके He has consistently applied foundational economic principles to address real-world challenges, upholding the Federal Reserve's high standards of sound economic management and transparent policymaking in the process. So with that, I am very pleased to welcome to the stage Chair Jerome Powell. भाई अगर यहाँ से चली गई ना नीचे
Oh, good morning. All right, it'll be fun to watch what happens in the book. It'll be fun to watch. Spreads are fine, abhi. Spreads have not widened. Spreads are okay. Okay, I'm out. That is good. He sounds good. It sounds good. Thank you so much. Thank you, Emily, and thanks to the National Association for Business Economics for the Adam Smith Award. It, for me, is an unexpected honor just to be mentioned alongside many of your past recipients, including particularly my predecessors, Janet Yellen and Ben Bernanke. So thank you very much for this recognition. I'll say, on a more personal note, I have greatly enjoyed my regular visits to your annual meeting and your conferences. It's really been my favorite venue all these years. It's a place. This is a place where we can talk about economic issues and not worry that someone's eyes might glaze over. Oof. I also appreciate the warm welcome I've always received here. And putting Fed staff aside for a minute, I can't think of a more lovable group of econ nerds anywhere. So thank you again for this prestigious award. And for the opportunity to speak to you here today. So, as we all know, monetary policy is more effective when the public understands what the Federal Reserve does and why. With that in mind, I hope to enhance understanding of one of the more arcane and technical aspects of monetary policy, the Federal Reserve's balance sheet. A colleague recently compared this topic to a trip to the dentist, but I found that comparison somewhat unfair to dentists. So today I'll discuss the essential role that our balance sheet played during the pandemic, along with some lessons learned. I'll then review our ample reserves implementation framework and the progress we've made toward normalizing the size of our balance sheet. And I'll conclude with some brief remarks on the economic outlook. So, one of the primary purposes of a central bank is to provide the monetary foundation for the financial system and the broader economy. This foundation is made of central bank liabilities. On the Fed's balance sheet, the liability side of the ledger totaled $6.5 trillion as of October 8, and three categories account for roughly 95% of the total. First, Federal Reserve notes, that is physical currency, totaled $2.4 trillion. Second, reserves, funds held by depository institutions at Federal Reserve banks, totaled $3 trillion. These deposits allow commercial banks to make and receive payments and meet regulatory requirements. Reserves are the safest and most liquid asset in the financial system, and only the Fed can create them. The adequate provision of reserves is essential to the safety and soundness of our banking system, the resilience and efficiency of our payment system, and ultimately the stability of our economy. Third is the Treasury General Account, or TGA, I'm right back, okay, boys. $800 billion, which is essentially the checking account for the federal government. When the Treasury makes or receives payments, those flows affect dollar for dollar the supply of reserves or other liabilities in the system. The asset side of our ledger consists almost entirely of securities, including $4.2 trillion of U.S. Treasury securities and $2.1 trillion of government-guaranteed agency mortgage-backed securities, or MBS. When we add reserves to the system, we generally do so by purchasing Treasury securities in the open market and crediting the reserve accounts of the banks involved in the transaction with the seller. This process effectively transforms securities held by the public into reserves, but does not change the total amount of government liabilities held by the public. So, the Fed's balance sheet serves as a critical policy tool, especially when the policy rate is constrained by the effective lower bound, or ELB.
When COVID-19 struck in March 2020, the economy came to a near standstill and financial markets seized up, threatening to transform a public health crisis into a severe, prolonged economic downturn. In response, we established facilities. Those programs, supported at the time by Congress and the administration, provided critical support to markets and were remarkably effective in restoring confidence and stability. At their peak in July 2020, loans from these facilities totaled just over $200 billion. Most of these loans with conditions stabilized. That's normally the deepest and most liquid market in the world, and the bedrock of the global financial system was under extraordinary pressure and on the verge of collapse. We used large-scale purchases of securities to restore functionality to the Treasury market. Faced with unprecedented market dysfunction, the Fed purchased Treasury and agency securities at an extraordinary pace in March and April of 2020. These purchases supported the flow of credit to households and businesses and fostered more accommodative financial conditions to support the recovery of the economy when it ultimately came. This source of policy accommodation was particularly important as we had already lowered the federal funds rate close to zero and expected that it would remain there for some time. By June 2020, we slowed our purchase pace to a still substantial $120 billion per month. And in December of 2020, as the economic outlook remained highly uncertain, the FOMC said that we expected to maintain that pace of purchases until substantial further progress has been made toward the committee's maximum employment and price stability goals. That guidance provided assurance that the Fed would not prematurely withdraw support while the economic recovery remained fragile amid unprecedented conditions. And we maintained that pace of asset purchases through October 2021. By then, it had become apparent that elevated inflation was not likely to go away without a strong monetary response. At our meeting in November 2021, we announced a phase-out of our purchases, and at our next meeting in December, we doubled the pace of that taper and said that asset purchases would conclude. Boys, Discord पर हूँ मैं अभी अब Significant tightening of financial stream conditions. close करो, alright? We were thinking of the events of December 2021.